Very important MCQ. Sorry, very important question for. Yeah, please. Sir, Rahul. 3. Yes, 3. Okay, chaliye. Shivangi. Yes, Shivangi, carry on. How many types? What are the names? So white wine, red wine, and rose. Absolutely wrong. It is going to be. You have not seen that wine. Yes, Rahul, please carry on. White wine and red wine. Absolutely wrong again. So types of wines Sir, are. can I? Yes, please, Rohit. Sir, white wine, red wine, rose wine, sweet wine, or sir, sparkling wine? Again, absolutely wrong. Okay. Yes. Anybody else? Please go to my YouTube channel and take a look at the wine part 1 chapter. Wine part 1. Wine part 1. उसको देखिए वहां पे दिखेगा. Types of wines are basically, not basically, it is actually uh, table wine. Okay. Table wine. After that, you have got sparkling wine. Then you have got fortified wine. And the last one is aromatized wine. Aromatized wine के बारे में आज हम जानेंगे. So what is table wine? ये जो आप लोगों ने कहा अभी, that red wine, white wine, rose wine, all this wine comes under table wine. Table wine are those wine. अब अगर कहा जाए कि table wine क्या है? Table wine are those wine which is simply manufactured with grape juice and yeast with a fermentation. Depending on the grape skin, if it is a white grape, it will be turned out to be a white wine. If it is a red grape, then it is turned out to be a red wine. अच्छा, okay. Now new question that comes. ये external आपसे पूछेगा, बहुत ही common basic question है. Can we make a white wine out of red wine? Can we make a white wine out of red wine? Obviously, yes. That's why this question has been asked. But how? Nobody knows. Very simple. If you crush the juice of the grape, you won't get a red color. It is the skin of the grape which imparts the color of the redness to the wine. So, if you crush the grape juice and remove the grape skin, which is a red grape skin from the juice, then it will nothing but a white wine only. Okay, but if you keep the juice and the grape skin contact for a long time, then definitely it will turn into a red wine. This is what happened after the crushing of the juice. In case of red wine, the grape skin and the juice are kept in contact for almost 24 hours. Then only the color get transferred because there is an anthocyanin or a pigment. ये देखो, ये बनाना का रंग येलो क्यों होता है? ओके, गुआवा एप्पल का जो color है white is red. So all this reason is because of there is a pigment on the top of the screen. That pigment converts the color of the fruits and all everything. Okay, this is what you need to keep in mind. So table wine is red, white, and rose. Sparkling wine, yes, your champagnes, your Asti Spumante, all this thing. Fortified wine, which you have learned few days back, it was port, sherry, Madeira, and then you have got aromatized wine, जिसके बारे में आज हम जानेंगे. नेचुरली नाम सुन के लग रहा है वाइन है, तो उसके अंदर हमने कुछ एरोमास और फ्लेवर ऐड किया होगा एंड दैट इज टर्न्ड इनटू एन एरोमेटाइज्ड वाइन. वेरी सिंपल, बस यही है, यही कांसेप्ट है, कुछ नया कुछ नहीं. सर, यस प्लीज राहुल बोलिए. सर डेजर्ट वाइन भी होती है? यस, देयर इज समथिंग कॉल्ड डेजर्ट वाइन, बट प्लीज पीपल इसके बारे में थोड़ा सा सही से समझ लो. डेजर्ट वाइन की कहानी क्या है? सो आम जब पेड़ में होता है, ओके, तो राहुल ने सोचा कि चलो पेड़ में आम लटक रहा है, जाके एक पत्थर लेके मारता हूं. लेकिन डे 1 को जब राहुल पत्थर से उस आम को मारने जाएगा, आम नीचे नहीं गिरेगा. लेकिन 5 दिन बाद वो आम ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा और राहुल के सर के ऊपर जाके गिर जाएगा. ऐसा क्यों होता है राहुल कि पहले दिन वो गिर नहीं रहा है, लेकिन 5 दिन बाद वो अपने आप ही ऊपर से नीचे गिर गया? पक चुका होगा अच्छे से इसलिए. हाँ, एब्सोल्युटली राइट. वो ग्रेप, वो जो मैंगो है वो पूरी तरीके से पक चुका है, इसलिए वो गिर रहा है.
So when you make a grape, when you make, पक जाने का मतलब क्या है? पक जाने का मतलब है वो मैंगो बहुत स्वीट हो गया है, और ज्यादा स्वीट हमें अच्छा नहीं लगता है। इसलिए when you make a wine from a grape which is fully ripened, और वाइन की भाषा में हम इसको कहते हैं लेट हार्वेस्टेड ग्रेप, मतलब अगर ग्रेप्स मतलब लाइक प्रोड्यूस होने के बाद अगर हमने उसको कम मतलब लाइक ज्यादा टाइम बाद अगर उसको हमने हार्वेस्ट किया खेत से, then this thing will going to change. So that is why it is known as a late harvested grape. फिर से बोल रहा हूं, late harvested grape. So when you make a wine with a late harvested grape which tastes very sweet, that wine is known as a desert wine. But hold on, there is also one more way. There is a fungus which is also known as Botrytis cinerea or Nobel rot. फिर से बोल रहा हूं, another important question. देखो ये जो एक्सटर्नल आपके एग्जामिनेशन लेने आएगा ना, he is a person जिनको बचपन में जब ये लोग होटल मैनेजमेंट कॉलेज में थे, इनको ये सब चीजें they used to learn, और वैसे मैं भी सीख के आया हूं। तो इनके वही कॉमन क्वेश्चन है जो उनके टीचर्स उनके टाइम पे पूछते थे। ये मैंने एक एक्सटर्नल की साइकोलॉजी टेस्ट किया। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, कल अगर शिवांगी पालीवाल टीचर बनता है कोई आईएचएम कॉलेज में, एंड देन ही गोज फॉर अ कॉलेज, देन द ट्रेंड विल चेंज because Shivangi will become teacher after 5 years from now, and then the things will going to get change again. तो एक करंट पैटर्न अभी फॉलो हो रहा है, ये पैटर्न को तोड़िए मत और यहां से क्वेश्चन आएगा। लेकिन जब आप लोग टीचर बन जाओगे तो देन आपके एक्सटर्नल की क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं कि ये पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो नोबेल रॉट क्या होता है और बोथ्राइटिस सिनेरिया क्या होता है? इट्स काइंड ऑफ अ फंगस दैट फॉल्स ऑन द ग्रेप स्किन, पंचर द ग्रेप स्किन, एंड ग्रेप स्किन पंचर करने के बाद देयर इज अ जूस। सो व्हाट विल हैपन, ऑन द टॉप देयर इज अ सनलाइट. Sunlight will shrivel the grape into a raisin or a kishmish. If you make a wine from kishmish or a raisin, definitely it will turn into a very sweet one. So one is late harvested grape, one is Nobel rot or Botrytis cinerea, it's a scientific name, and the last one is, how can you make a sweet wine? The last one is fortified wine, जो हमने शेरी, पोर्ट, मदिरा के केस में देखा है। ओके पीपल, व्हेन आई कम टू शेरी, मदिरा, प्लीज सोलेरा सिस्टम और मदिरा के लिए एस्तुफा सिस्टम, इसके बारे में देख लेना। एग्जामिनर पक्का पूछेगा आपसे व्हाट इज सोलेरा सिस्टम। सोलेरा सिस्टम का मतलब होता है इट इज अ मैच्योरिंग प्रोसेस ऑफ शेरी, एंड मदिरा के केस में देयर इज समथिंग कॉल्ड एस्तुफा सिस्टम, इट इज वंस अगेन मैच्योरिंग प्रोसेस ऑफ मदिरा। प्लीज आज रात को कान में एयरफोन डाल के मेरे लेक्चर्स को एक बार इन अ ब्रीफ सुन लेना, जस्ट लाइक यू लिसन टू अ म्यूजिक और समथिंग। आई नो यू विल फील बोरिंग, but please listen to it. I think you need not to take a look at any other notes from that. Okay, but for the examination please read it in a proper way. ठीक है, तो चलो ये छोटा सा चैप्टर हम खत्म कर लेते हैं। यस प्लीज बोलिए। तो सर डेजर्ट वाइन फिर फोर्टिफाइड वाइन्स के अंदर आएगा या अलग से आएगा? अलग से आएगा, इट्स अलग से 5 आएगा। पार्ट हो गए, वाइन आर 5 पार्ट्स। तो वाइन हैज गॉट नो वंस अगेन, टेबल वाइन्स के अंदर ही जो डेजर्ट वाइन की क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली आता है आपका, नॉट बेसिकली, एक्चुअली आता है आपका टेबल वाइन के अंदर। सो इट इज रेड, व्हाइट, रोज एंड डेजर्ट वाइन। ये हो गया टेबल वाइन की कैटेगरी। फोर्टिफाइड वाइन के अंदर यू हैव जस्ट गॉट पोर्ट, मदिरा एंड शेरी। बिकॉज देखो एट द एंड ऑफ द डे डेजर्ट वाइन इज मेड फ्रॉम अ ग्रेप ओनली, फर्मेंटेशन से ही बन रहा है। लेकिन जो फर्मेंटेशन प्रोसेस में एडिशन ऑफ एन एक्सटर्नल अल्कोहल, दैट द वे वी मेक अ शेरी, पोर्ट, मदिरा, दैट इज अ सेपरेट स्टेप, दैट इज व्हाई इट इज अ सेपरेशन। ओके, दिस इज हाउ इट इज. So if this is a simple question, when somebody asks you that how many types of wines are there, sir, there is a table wine under which red, white, rose, desert wine. Sir, there is a क्या है उसका नाम, sparkling wine under which champagne from France, Yalumba from Australia, Sekt from Germany, Astis from Italy are there. And there is something called fortified wine, sir, where there is an addition of alcohol, stall the fermentation and convert the remaining sugar into a sweet wine. Under this type we have got क्या है, port, sherry, madira.
then there is something called aromatized wine, which we'll learn right now. Aromatized wine. So aromatized wine are known, the biggest aromatized wine of all right now in front of your screen at this point of time is known as a vermouth. Vermouth. Vermouth is a very, very famous wine that comes from the Italy. Now, and there is also coming from France. So there is a French vermouth and there is an Italian vermouth. So take a look at this fact. So there is a, if a vermouth, which is an aromatized wine, which has been flavored with 50 different types of herbs, spices, coriander roots. These are all our types of herbs, huh? Thyme, rosemary, all this thing. So if it is coming, if the vermouth is coming from Italy, then it will come from the Turin. Turin is a place in Italy, a famous city of Italy, you can say. And the other one in the France, there is something called Marseille. Marseille is it's not Marseille, huh? It's known as a Marseille. So Marseille is a place in France where you get the vermouth. So now vermouth can come from Italy, vermouth can come from France. If it is coming from France, then it will be coming from the city of Marseille. If it is coming from Italy, then it will come from the city of Turin. बस इतना ही आपको याद रखना है. The word vermouth is coming from the word called something like this. Hold on. एक Latin word है, उसका नाम है WERMOD, something like this. इसका मतलब और कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है वर्मवुड. आप अगर चाहो तो इसको आप हिंदी में देख सकते हो. आई थिंक द मीनिंग ऑफ द वर्मवुड इज जष्टि मधु, something like this. It's something kind of a honey or thing, something like. You can take a look at the Google and you can try. Okay, so there are 50 different types of herbs and spices which is just flavored with vermouth. Now it's very simple thing. Flavoring के बारे में मुझे शायद बोलने की कोई जरूरत नहीं है. जैसे हम फ्लेवर करने के 3 रास्ते हैं. एक है either you infuse that entire thing, your quinine, coriander, citrus, rosemary inside the liquid, or else you can just boil the wine and you can add the flavor. But अगर हम wine को boil कर देंगे तो एक problem हो सकता है. क्या problem होगा people? तो अल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा. And it will turn into a gin. ये मत बोलना अभी जिन. नो, नॉट विनेगर. ये मत बोलना आपके जिन बन So जाएगा. normal प्लीज यार. sweet water ही रह जाएगा. When we boil a alcohol, it will turn into a brandy. Simple कहानी है. That is why brandy is known as a burnt wine. बार बार बोलता हूँ ये शब्द को यूज करता हूँ मैं हर क्लास में. Burnt wine मतलब जला हुआ wine. Okay, when you boil a alcohol, boil a wine, it will turn into a burnt wine. You can boil any kind of alcohol. आप अगर वोडका को बॉयल कर लो, बियर को बॉयल कर लो. बियर को अगर आप बार्ले वाला बियर उसको अगर आपने बॉयल कर लिया, हॉप्स निकाल के, इट विल टर्न इनटू अ स्कॉच विस्की. सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन अगर आप वाइन को कन्वर्ट करोगे तो वो इमीडिएटली ब्रांडी बन जाएगा, बिकॉज वो स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाएगा. चलो ठीक है. सो ये है कॉमन सेंस की क्वेश्चन. प्लीज बी रेडी. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. वंस अगेन, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है खेत में जाके आपने ग्रेप्स को निकाला. ये 3 तरह के ग्रेप्स होता है which is commonly used for manufacturing your this thing, your क्या नाम है इसका, vermouth. Catarato, I repeat again, Catarato, Trebbiano and Pikepole. Catarato, Trebbiano and Pikepole. Catarato, Trebbiano and Pikepole. Okay. Then you crush this grape, it will turn into a juice. Once it is juice, then fermentation will start. लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग केस होता है फर्मेंटेशन के टाइम पे. जस्ट यही एक फर्क है बाकी सबसे. एडिशन ऑफ मिसेल, MISTELLE. व्हाट इज मिसेल? मिसेल इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ ग्रेप जूस एंड ब्रांडी. तो कुछ प्रीवियस ग्रेप जूस है, उसके साथ इन लोग क्या करता है कि ब्रांडी को ऐड कर देता है, एंड देन इट इज बॉइल्ड टुगेदर, रिड्यूस करके. बॉयल करके अगर आप रिड्यूस करोगे तो इट विल टर्न इनटू अ वेरी थिक सिरप. That syrup is added to the vermouth wine.
This is what the extra thing is happening. Otherwise, rest all everything is fine. So there is a mixture of grape juice, समझ लो एक कैटराटो टेब्रियानो पाइक पॉल का मिक्सचर कर लिया आपने, उसके अंदर आपने क्या करा, ब्रांडी डाल दी और उसको बॉयल कर दिया. बॉयल करने से क्या होगा, इट विल रिड्यूस एंड मिक्स्ड अप टू अ फर्मेंटेड वाइन. अब सवाल यहां पे भी आता है, सर तो यहां पे अगर हम ग्रेप जूस को बॉयल कर रहे हैं और ब्रांडी को बॉयल कर रहे हैं, तो सर यहां पे क्या वो आपका वाइन वाला कंसेप्ट, बर्न्ट वाइन वाला कंसेप्ट काम नहीं ये कर सकता है? देखो यहां पे अगर आपको मैं एक चीज बोल देता हूं, 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ही वाइन मतलब अल्कोहल जो है वो evaporation start होता है. If you do it below that, it will definitely boil, but yes, it will take some time. थिक सिरप बनने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन yes, this is also a fact, it will never going to evaporate. Okay, बार बार बोल रहा हूं, alcohol boiling temperature 78 degree Celsius, 78 degree Celsius. Please remember this. Okay. Then उसके बाद yes, you do the infusion and flavoring. Either you boil with it, either you dip it inside. जो आपकी मर्जी है वो आप कर लो. उसके बाद फाइनिंग एंड फिल्टरेशन कर लेना, एंड देन फाइनली यू रेफ्रिजरेटेड एंड देन यू बॉटल. तो ये सारे जो लास्ट के 3 पॉइंट है ये तो कॉमन है. जैसे कि समझ लो आइसिंग ग्लास, फाइनिंग होता है आइसिंग ग्लास, ब्लैडर ऑफ अ कॉट फिश, उससे बेसिकली इसका वाइन की फाइनिंग होती है, एंड देन यू रेफ्रिजरेट एंड फाइनली यू बॉटल. तो दिस इज द कैच हियर. ये जो कैच है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है. एडिशन ऑफ मिसेल, एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज मिसेल, दैट्स इट, और कुछ नहीं. ठीक है, तो कैटोराटो, टेबुरियानो एंड पाइकपोल, these are the 3 grapes which is used for the making vermouth. Then there are types. देखो types क्या होता है, first one is a rose dry vermouth, sweet vermouth and rose vermouth. Naturally जितने सारे ड्राई वर्मोथ है, they come from the French region. It's got a yellow to golden color. Sweet vermouth are come basically red in color, and it comes from the and it's come from the Italy. All right. These are your brands. Just hold on, people. I need to. There's a call coming, and I have to take this call. It's very urgent. Okay, hold on. Yeah, I'm extremely sorry again. Okay, so now let's move back here and take a look. So dry vermouth brands are your martini. ये वो famous martini glass के बारे में आप अभी तक जो आप सुन रहे थे, martini cocktail, martini brand, martini glass, all this thing, it actually like this. So अगर कोई आपसे कहे कि people, what is a martini? Sir, martini is a type of glass. Sir, martini is a type of cocktail which is shown in the James Bond movie 007 favorite drink, which is made from your Lillet. Lillet is once again a type of vermouth. Martini is once again a type of vermouth. Okay, and it is made from gin, vermouth, Lillet, and then we add some ice, shaken but not stirred. So martini अगर कोई आपसे कहे क्या है, martini is can be a glass. Martini can be a famous cocktail of James Bond. Martini can be a dry vermouth, a dry French vermouth. So it's a brand name actually. अगर देखा जाए, आप अगर होटल में जाओगे तो आपको ऐसे एक मार्टिनी का बॉटल दिखाई देगा. This is known as a martini bottle. So martini is a type of vermouth. Chambray, Torella, Cinzano, and Noli Pra. These are the brands of your vermouth. Apart from that, there's a sweet vermouth. Naturally, dry का मतलब होता है there is less sugar. Sweet का मतलब होता है there is a lots of sugar. That's why there is a Martini Rosso and Cinzano Bianco. इसके अलावा एक bitter sweet concept होता है that is known as a Pantemes. Okay, Pantemes. So ये है आपके vermouth के बारे में basic knowledge. तो बस simple चीज है. There are 2 types of vermouth: French vermouth and Italian vermouth. French vermouth comes from the Marseille, and Italian vermouth comes from the Turin. 50 different herbs, and there are several all kind of brands in that. Okay, this is what you need to keep in mind. This is about the brands of vermouth. Now we go to a
another very, very small topic. This is we ends up with our aromatized wine. It is served in a Paris goblet glass. Another very, very important question for MCQ in the semester end examination. It's served in a Paris goblet glass. It is also act as an aperitif. People, this is a very, very important question again, which external will definitely ask. What is the difference between aperitif and digestive? कोई बोल सकता है? कल की क्लास में मैंने कहा था. Anybody can say what's the difference between aperitif and digestive? Aperitif and digestive. Anybody? Sir, aperitif sir before meal ली जाती है और digestive after meal. Excellent, excellent, fantastic. Your name is, sorry, I forgot. So Rohit. Rohit, yes, absolutely right. This is an absolutely right answer. It's that the aperitif that's served before meal. इसका मतलब है कि जैसे कि समझ लो appetite. I'm sorry, excuse me. Is let's take example, if there is something called appetizer, same way there is something called aperitif. So when you enter a function or something, you should be served first of all aperitif, which is known as a vermouth, one small glass of vermouth, which is not high in alcoholic strength, but it will stimulate your appetite. Okay, because we all know that when this alcohol goes inside the stomach, alcohol has a very it might be bad for our liver, bad for our stomach. Basically, alcohol is always bad for our liver, but the alcohol has a very important capability which no other things have. It's act as a fantastic digestion. अभी आप एकदम चिकन बटर चिकन बिरयानी 10 गुलाब जामुन कुल्फी 5 चिकन टिक्का और उसके बाद पनीर बटर मसाला सब खा गए एक साथ, ठीक है, और उसके बाद you feel that you're not able to walk. Please, if you drink alcohol, it can be a wine, it can be a spirit or anything, and then you sleep and you wake up, then everything will be digested properly. This is the beauty of only alcohol. But do not go behind this beauty, because this will your stomach will be digested, but yes, filtering, our liver is the biggest filter of our body, it will going to get damaged very soon. Doesn't matter if you drink alcohol of 8 percentage V by V, or if you drink an alcohol of 42.9 percentage, जो भी आपको पीना है आप पी सकते हो, लेकिन at the end of the day alcohol is really injurious to health. Okay, चलो ठीक है, वो तो बात की बात है. तो बस इतना ही याद रखना, it is act as an aperitif, and digestive is whenever we finish up the meal, we generally take a sweet like a kulfi, like ice cream. Same way, at the end of the meal, we will also take some alcohol, and also take some sweet alcohol, sweet spirit. It can be a desert wine, as per Shivangi Paliwal, who have said to us about the desert wine, or it can be a liqueur, as per Mr. Saksham Singhal. There is a famous liqueur called Bailey's Irish Cream. It is made from Irish whiskey, and then we add some cream inside it. Oh, then it is served on a crushed ice. It is known as a cold coffee. It is known as a alcoholic cold coffee. Looks for the taste amazing. Just I have seen every European after the finish of their meal, they go to the bar and just take a 30 ml of Bailey's Irish cream and have it on a crushed ice, or we call it frappe. Bailey's Irish cream frappe. It's really, really amazing thing to see. Okay, so that is known as a digestive. It can be a liqueur. An aperitif can be an appetizer. Okay, that's how it is. This is the done with the vermouth. Now we enter to the bitters. तो अभी तक जैसे हमारे सक्षम सिंगल ने पहले क्लास में कहा था कि liqueurs, I have told him that if it is a liqueur, then it has to be get sweetened. So bitters are the spirit which is also flavored like alcohol. मतलब सिंपल कहानी है, आपके पास ब्रांडी है, आपने उसके अंदर ऑरेंज ऐड कर दिया, तो वो ऑरेंज ऐड कर दिया, and then you at the end you add a sugar syrup, then it will turn into a liqueur. Sorry, I'll take this call again, sorry extremely.
Yeah, sorry again. So now we go to the bitters, which means that if we yeah, so if we add a sweetness to a spirit, flavored spirit, it will turn into a liqueur. If we don't add anything, it will turn into a bitters. Simple चीज है. बेनेडिक्टाइन अ फेमस लिक्योर जिसके अंदर 30 डिफरेंट तरह के हर्ब्स एंड स्पाइसेस जाता है. उसको अगर आप पी के देखोगे तो क्या होगा, बिल्कुल खट्टा लगेगा. मतलब ऐसा लगेगा कि somebody has given you a medicine without water. Somebody has given you a tablet without water. इतना खराब लगेगा. But if you add sweetness to that, then it will turn into a liqueur. If you don't add sweetness to it, it will turn into a bitters. खत्म काम. ठीक है. So this is how it is with the bitters. अब बस आपको वही ब्रांड जानना है, दुनिया के फेमस कुछ बिटर्स के नाम. ये देख लीजिए. सबसे पहले आपके सामने आएगा कैंपारी, नेशनल ड्रिंक ऑफ इटली. फिर से बोल रहा हूं पीपल, कैंपारी इज अ नेशनल ड्रिंक ऑफ इटली. कंप्लीटली रेड इन कलर जस्ट लाइक दिस वन. ये देखिए खून की तरह लाल होता है. एंड इट इज नोन एज अ, it's come from the red in color, made with orange and quinine. But yes, these are not wine. I repeat again, these are not wine. These are not wine, not wine, not wine. These all are spirit. A bitters made from a spirit. Amar Picon, famous French one, made from black color. Jägermeister, a very famous bitter that is made from like few herbs and spices. One thing is coming from Germany. If you go to the if you go to a 5-star hotel tomorrow for IT, you will see there is a famous cocktail known as a Jager bomb. Okay, Jager bomb. Please find out what it is actually. Angostura bitter. It is known as father of all cocktail that comes from the Trinidad and Tobago, flavored with roots and herbs. A very famous one. This is how the bottle look like. ये आपके होटल में सबके पास दिखाई देगा, कोई भी बार में अगर आप जाओगे. It's known as the Angostura bitter. Comes from Trinidad and Tobago. There are several roots, herbs, spices, coriander roots, cardamom, cinnamon, everything is served inside this. Okay. Then once again, finally, there is something called Cynar. Cynar is basically an Italian bitter made from artichoke. Artichoke के बारे में सबको मालूम ही है, ये देखो. तो ऐसे करके there are lots of other different types of bitters. I have shared note in the morning. Take the name of the note with the flavors and that's it. But बस इतना ही है. इस चैप्टर में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है. You have to remember the vermouth के बारे में, कहां से आ रहा है, what are the grapes and what are their brands, and then finally definition and the difference between bitters and liqueurs. बस और कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, right? So now I would like to say it end because और कुछ नहीं है मेरे साइड से. Now people, any question that you have? Yes, people, any question you have got, you can raise now regarding exam or anything else, whatever you like. Okay. No one, no question at all. चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ फिर इससे. कौन है ये? Who is this? उदित श्रीवास्तव. उदित श्रीवास्तव, can you tell me this question? Udit Srivastava, be ready. I'm going to ask you a question now. Yes, sir. Okay, right. What is angel share? Angel shares. What is angel share? Okay. Angel